Good evening, everyone. Welcome to today's webinar, From Stability to Prosperity, How Bonds Build Real Wealth. In an environment of market volatility and evolving interest rate cycles, bonds continue to play a critical role in providing stability, predictable income, and long-term portfolio balance. To guide us through this discussion, we are delighted to have Mr. Sanjeev Kumar, founding member and co-CEO of BondVue, who brings over 25 years of experience in India's fixed income and capital markets. We look forward to his insights on how investors can effectively use bonds to create resilient and sustainable portfolios. Please join me in welcoming Mr. Sanjeev Kumar. Over to you, Sanjeev sir. Thank you, Ananya. Thank you for your introduction. And I think, as we mentioned in our communication, that we will keep this webinar for 35 to 40 minutes, followed by question and answer. The topic today is very topical, very relevant, very apt, because we have seen a sort of the bull market post-COVID. Market has been moving one way. People have definitely made money. Some people, they have lost money also. So from that perspective, I think this topic is extremely apt, extremely relevant. So the topic, as you rightly mentioned, Ananya, it is stability to prosperity. Typical narrative, if you see in today's market, is that only equity can create wealth. This is the narrative that has been basically created in last 10 years, at least post 2014, because once Modi government came into picture and market, we have seen, we can, if एक केवल मैं एक blip अगर हटा दूं कोविड का या 2018 के मिड कैप क्राइसिस का, तो मार्केट वन वे ही मूव किया है. और वैसे पर्सपेक्टिव में ये नैरेटिव, दिस नैरेटिव हैज बीन फॉर्म्ड और क्रिएटेड दैट ओनली इक्विटी, you can only create wealth through equity. Let's see, how the real situation is. It is definitely a thought-provoking idea, thought-provoking, basically the topics or the points which we are going to cover. So as I mentioned, that the popular belief is that that equity can create wealth. It is true, equity can create wealth, but we need to understand the real picture, what is happening in the market. So for that, we will understand what we are going to cover here. We will understand the entire investment landscape, what are basically the various products where any investor can participate. The second point which we are going to cover in this webinar is equity is not always a wealth creator. Rather, contrarian to that, because of the volatility, the fear and greed basically creeps in, and because of which most of the investor, when I am talking, I am talking about a general investor, because what they do, they basically buy more and they become greedy when market is at top, and they become fearful when market is at bottom. So because of the volatility, they lose money. So volatility destroys, and because of this behavior, they really lose money. Third point which we are going to cover, and we will show a couple of slides which will be a very बहुत ही important होगा वो slide. अगर आप उस data point को देखोगे तो उससे सारे लोगों को ये पता चलेगा कि actually जितने भी investors होते हैं, वो investors जो पैसा lose करते हैं, वो पैसा lose करते हैं wrong asset use के कारण. एसेट के कारण ना वो पैसा बनाते हैं ना पैसा लूज करते हैं. उस एसेट को वो कैसे यूज कर रहे हैं, किस फ्रेमवर्क में वो उसे यूज कर रहे हैं, उसके कारण वो पैसा बनाते हैं या पैसा लूज करते हैं. तो इस तीसरे पॉइंट को आई विल कवर इन दिस वेबिनार. तो चौथा जो पॉइंट है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज कि अगर किसी कोई इन्वेस्टर अपने पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे इफ ही और शी इज जनरेटिंग 10 to 12% return over a long period of time, then it is exceptionally well, because the power of compounding will kick in. More often than never, we have seen that most of the investors at portfolio level, definitely at equity level, or at if you bisect the portfolio,
ऑन ग्रैनुलर लेवल हो सकता है कि वो पैसा जो है बना ले, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे जनरेटिंग 10 to 12% रिटर्न is very difficult, and if someone is making it is exceptionally good. और उसके बाद हम लोग ये कवर करेंगे कि हाउ द प्रोडक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द साइंटिफिक फ्रेमवर्क। किस फ्रेमवर्क में कौन सा इन्वेस्टर कैसे पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो ड्राइव करता है, वो डिसाइड करता है कि वेदर ही और शी इज मेकिंग मनी और नॉट, और वेदर ही इज क्रिएटिंग वेल्थ और नॉट। एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में, इन सारे कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में बॉन्ड becomes central in one's portfolio. So narrative which has been created that only equity can create wealth, उसके कॉन्ट्रेरियन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर उभर के आता है कि बॉन्ड का स्थान जो है वो आपके पोर्टफोलियो में बनता ही बनता है, बिकॉज साइंटिफिक फ्रेमवर्क क्रिएट्स द वेल्थ, not the product or not the asset class. So coming back to, I think this slide I have taken, this is a slide from US websites, but it is relevant in Indian context also. So you can, just for simplification, for understanding purpose, it is important for us to understand जितने भी रिटर्न और रिस्क रिटर्न फ्रेमवर्क पर कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ पर हैं, उसको हम लोगों ने मैप करने की कोशिश की है। बिकॉज ये आपको ये बताएगा कि किस प्रोडक्ट में कितना रिस्क है, हाउ मच रिस्क वन इज टेकिंग, एंड हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, और उस बेसिस पे क्या रिटर्न जनरेट होगा। सो ऑन एक्स एक्सिस इफ यू सी the risk the risk has been mapped, and on y axis it is return that has been mapped. So on the lower end, if you see, it is money market, US treasury, you can call it, is Indian, the treasury bills here in Indian context, and municipal bonds, corporate bonds, high yield bonds, and the global bonds, you can say. So this is basically, this comes under fixed income. Then you have got real estate, and again, if you go on the curve, it is dividend stocks, large cap value, large cap growth, mid cap, small cap, international, emerging, and then venture capital, which now comes under, either through AIF route or directly, one can invest. So इस risk return framework को समझने की बहुत जरूरत है, and most of the investor, they don't understand what kind of risk is associated with respective product segment. So higher the risk, higher the return. But one thing is very, very relevant and very important from this slide is that bond is at central point. So bond is basically is the foundation and the cornerstone of anyone's portfolio. तीसरा जो नैरेटिव, जब मैं प्रेजेंटेशन, व्हेन वी स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन, एक चीज जो, एक नैरेटिव जो बनाया गया है, उस नैरेटिव को चैलेंज करते हुए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इक्विटी इज नॉट ऑलवेज अ वेल्थ क्रिएटर. Volatility, because we have seen a lot of volatility in equity. So more often than never, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा बाय करते हैं, और जब वो नीचे जाता है तो वो बेच के निकल जाते हैं. उसके कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ द फियर एंड ग्रेड. उसके कारण क्या होता है? अगर कोई इन्वेस्टर अगर 20 साल 25 साल स्टे इन्वेस्टेड है, डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकली एंड रैशनल इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट इफ समवन स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर 25 30 40 years, fair enough, I think you can definitely generate good return from equities. However, in practical situation, it doesn't happen, because we all are prisoner of our emotions. हमें इमोशंस ग्रिप करता है, हम किसी फ्रेमवर्क पर हम लोग स्टिक नहीं करते हैं, और जिसके कारण जब वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में तो हम ग्रीडी और फियरफुल होते हैं. और इफ यू सी द नेक्स्ट चार्ट अगर आप देखेंगे तो इस रिटर्न को हम लोगों ने 20 साल के रिटर्न को मैप करने की कोशिश की, और हमने ये देखा कि वेरियस एसेट क्लास ने उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर्स में कितने रिटर्न दिए हैं. बट ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि 2005 से लेके 2025 के पीरियड को जब हम लोगों ने मैप किया, तो हमने देखा कि इक्विटी ने बट ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव ईयर्स में डिसप्रोपोर्शनेट रिटर्न दिए हैं, बोथ साइड, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड. फॉर एग्जांपल इन 2008 इफ यू सी, जो बात मैंने लेफ्ट हैंड में जो एरो बनाया है उससे क्लियर ये एविडेंट होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में इक्विटी, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द लेमन क्राइसिस, इट वाज इन 2008,
that year the market has given 51% return. और अगर 51% मार्केट गिरता है टॉप से, तो यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द साइकी ऑफ इन्वेस्टर्स। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोग जो है फियरफुल होके अपने पोर्टफोलियो को बेचते हैं। और जस्ट 2008 के पहले जब पीक था, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर आप चार्ट को देखेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इक्विटी इज डेफिनेटली हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न। हाउएवर, ड्यू टू वोलेटिलिटी, इट इज वेरी वोलेटाइल। 2008 का आप वोलेटिलिटी देखिए, 2011 की वोलेटिलिटी देखिए, 2015 की वोलेटिलिटी, सम ऑफ द वोलेटिलिटी हैज नॉट बीन कैप्चर्ड, लाइक 2020 वोलेटिलिटी हैज नॉट बीन कैप्चर्ड बिकॉज कोविड के कारण मार्केट शार्पली नीचे है और शार्पली फिर वो रिकवर भी हुआ। बट वैसे सिचुएशन में जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स होता है, वो फ्री फियर और ग्रीड के कारण वो अपने पोर्टफोलियो को या तो खरीदता है, ज्यादा से ज्यादा खरीदता है, या बेचता है। और अगर दूसरे साइड में अगर दूसरे एसेट क्लास को देखें, तो वो स्टेबल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस स्लाइड्स के द्वारा विच आई वांट टू कन्वे इज दैट इफ यू सी द गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रिटर्न को देखें, इट इज कंप्लीटली वेरी वेरी स्टेबल एंड इफ यू ऐड 2% ऑन दैट, डेफिनेटली कॉर्पोरेट बॉन्ड रफली 9 से 10% के बैंड में रिटर्न उस पर्टिकुलर ईयर में बनाया होगा। सो दैट इज वेरी वेरी स्टेबल रिटर्न। एफडी ने भी रफली अगर आप देखें तो 7 से लगभग 8% के रिटर्न दिया है। गोल्ड हैज बीन स्लाइटली वोलाटाइल, silver has been volatile. Off late, silver and gold has run up like anything. Real estate is very, very stagnant. But what point which I want to make is it is important for us to see what kind of return each asset class has given, what has been the volatility, and in that particular situation, how investors have behaved. And you'll be surprised to know that जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा कि वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो होता है वो रॉन्ग एसेट यूज के कारण होता है, एसेट के कारण नहीं होता है। और हमने ये देखा कि टिपिकली निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में दैट हैज दे हैव गिवन रफली 12 to 13% रिटर्न। बट इफ यू सी द एवरेज रिटर्न ऑफ द एवरेज रिटर्न ऑफ एवरेज इन्वेस्टर, they have not beaten even Nifty. They have just generated 7 to 9% return. If you just do the dipstick and see the return of a normal investors who basically get gripped by fear and greed, so they have not even beaten the long-term return of Nifty. What does it mean? It means that the product जो मैंने पहले जो narrative जो set किया गया कि actually equity create wealth, the the real picture is that it is the behavior who decides the return. How you are behaving in different cycles, that basically generates the return. इसको और अगर हम थोड़ा नीचे जाके और इसको अगर हम ड्रिल डाउन करते हैं, तो आई थिंक द डेटा पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जैसे मार्केट की एक साइकिल होती है इक्विटी मार्केट में। सो व्हाट वी हैव सीन दैट व्हेन मार्केट इज पीकिंग अप, most of the investors, they invest more rather than they stick to they get stick to asset allocation। वो जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। और ये ऐसा हम लोगों ने एक बार नहीं देखा है। अगर आप 1991 के मार्केट को देखें, 2000 के मार्केट को देखें, 2008 के मार्केट को देखें, 2017-18 के मार्केट को देखें, 2021 के मार्केट को देखें और अभी मार्केट को देखें, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, जब वो पीक करना शुरू होता है, नॉर्मल इन्वेस्टर्स उस पीक मार्केट में आते हैं। एंड द डेटा क्लियरली शोज दैट व्हाट मार्केट इज स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ देयर द द एलोकेशन इज टुवर्ड्स इक्विटी। पीक में हमने देखा लगभग 85% इक्विटी है, बुल मार्केट में 70% इक्विटी है। करेक्शन होता है तो रादर देन करेक्शन में इक्विटी का एलोकेशन बढ़ना चाहिए तो 40% इक्विटी है। जब रिकवरी होता है तो रफली 60% इक्विटी है। सो इसका मतलब ये है कि द फियर एंड ग्रीड इज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन वंस पोर्टफोलियो। दूसरा जो हमने देखा, जो टिपिकल इन्वेस्टर्स है उनके पोर्टफोलियो को अगर आप देखें और उनके बिहेवियर को इफ यू स्टडी, आई थिंक 70 to 90%, इफ यू सी बुल मार्केट, व्हेन द मार्केट इज स्पीकिंग अप, रफली इक्विटी एलोकेशन एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स का रफली इट इज रफली 70 to 90%।
दूसरा जो पॉइंट हमने ये भी देखा कि typically when market is picking up, normal investor tend to invest in small cap and thematic. So they chase thematic, and because of which, because theme drives the bull market. If you see 2003, it was driven by the infrastructure. 2001, 2, it was driven by IT. 2000, for example, 14, 15, if you see, it was driven by NBFC, and it was driven by mid cap. Now, definitely it was a generic, but still it was a market. It's a market infrastructure theme that is driving the market. So theme drives the market, and more often than never, what we have seen that retail investors, they invest in bull market, invest in small cap or thematic. They chase that, and because of which they lose money. द थर्ड पॉइंट विच जो हमने मार्केट के साइकोलॉजी को समझा और मार्केट के इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझा, तो व्हाट वी हैव सीन दैट टिपिकली डेट का मतलब लोग समझते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट का मतलब लोग समझते हैं लिक्विड फंड भी नहीं समझते बट फिक्स्ड डिपॉजिट समझते हैं. देयर इज ए कंप्लीट poor awareness about bonds, which is very important for us to create some sort of awareness among various investors. एंड जो चौथा चीज हमने देखा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, उनके कोई गोल्स नहीं है. दे बेसिकली इन्वेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल्स, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रीड, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट their peer group they are doing and what is there in the market. They get swayed by the noises, they don't follow the framework. So what does it mean? It means that the emotional allocation जो है that basically becomes relevant, and it is not the real investing, it is the emotional allocation that happens, and that is being driven by fear and greed itself. सो एक्चुअल इसको अगर मैं समराइज करूं तो बड़ा सिंपल है कि बुल मार्केट क्रिएट्स ग्रीड, and because of the greed, the investors basically they take over exposure to risky assets, and when market corrects, again they become fearful, they sell the stocks in panic at wrong time, they again re-enter, and when market recovers. So this cycles, not once. If you see last 100 years of global history or Indian history, this is a typical behavior of any investor. This cycle repeats, and because of which a normal and general investors, they basically lose capital and they lose time. So the narrative which has been said or set in last 10 years that it is equity which basically creates wealth. It is fair that equity creates wealth, but very few people, they have got their framework and they basically stick to the framework. So what does it mean? It means that it is not the product or it is not the asset class which really creates wealth. It is the right framework for right investors, which is a real differentiator. This is very, 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 very important to understand. सो अगर हम अपने इन्वेस्टर के सेगमेंट को अगर बेहतर ढंग से समझें तो देर आर बेसिकली जनरली थ्री क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स. आई एम नॉट टचिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स. टिपिकली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स and summation of individual investors, you can say, they can be classified into three categories. One is the retail and mass affluent. जो रिटेल और मास एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स हैं वो टिपिकली उनका फ्रेमवर्क जो होना चाहिए वो गोल बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए, बिकॉज दे टिपिकली चेज गोल. Goal, what does it mean? What is the meaning of goal? Goal means children's education, retirement planning, tax planning, wealth creation. These are the various goals. Buying the car, these are the various goals. Whereas if you see HNI, they should follow the asset allocation framework. Asset allocation framework means how much portion should be in equity, how much portion should be in debt. Debt में भी कितना direct कितना indirect होना चाहिए, equity में भी कितना direct indirect होना चाहिए. There should be a proper asset allocation, and if someone follows that, then probably they will be able to beat the market noises. And third category of investors, which off late for the last 4 or 5 years, if you see there is a boom in that, that is ultra HNIs and family offices. So if you see ultra HNI and family offices, typically they should follow investment policy statement framework. Every family office or ultra HNI, they should have IPS in place. But you'll be amazed and surprised to see, based on my experience, when I am meeting various family offices, in my individual capacity, I have seen that,
at only 20-30% of the family offices, they have got a right kind of framework, which is called IPS. Most of the family offices now, they are understanding the need of IPS, and now they are basically engaging professionals to define and decide the IPS. So the point which I want to convey and say is, the for various class of investor, there should be a framework. Either the framework should be goal based, either the framework should be asset allocation framework, or it should be IPS, and that basically decides that how they can cut themselves from market noises, how can they basically keep themselves neutral in various market cycles. इसको थोड़ा और हमने और ड्रिल डाउन करके जब हमने इसको डिसाइड किया, तो हमने देखा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, टिपिकली मैं जनरल एक रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, टिपिकली उनके मॉडल पोर्टफोलियो कैसे होने चाहिए अगर वो किसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं. बट ऑब्वियस है, the need, the risk taking ability, and everything differs from investor to investor. But if I broadly classify retail HNI and ultra HNI, the model portfolio of a retail investor should be 40 to 60% in equity, 40 to 60% in debt. HNI should have 45 to 65% in equity, 25 to 40% in debt, and 5 to 15% in alternates. And ultra HNI and family offices, there should be a clear-cut bucket of income growth and protection bucket. And if someone creates these kind of bucket and these kind of framework, they will be able to beat the market cycles. अगेन थोड़ा और डिटेल में जब हम लोगों ने इसको समझा, तो हमने देखा कि टिपिकल बिहेवियर ट्रेड्स क्या होते हैं इन इन्वेस्टर्स का, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड द बिहेवियर ट्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स. सो अगर हमने एमएनआई एचएनआई इन्वेस्टर्स को हमने देखा, तो टिपिकली उनका गोल अचीवमेंट कोर फोकस होता है. एचएनआई का उनका एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई का जो फोकस होता है, रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो एफिशिएंसी इज द फोकस. एंड आईपीएस ड्रिवन जो अल्ट्रा एचएनआई एंड फैमिली ऑफिसेस होते हैं, उनका प्रोसेस इज द कोर फोकस. एंड टिपिकली जो उनका एसेट एलोकेशन, बेस्ड ऑन आर रिसर्च एंड आर एक्सपीरियंस, व्हाट वी हैव सीन दैट जो रिटेल इन्वेस्टर्स एमएनआई एंड एचएनआई होते हैं, उनका जो बकेट होता है, वो इक्विटी में 45 से 65% डालते हैं, फिक्स्ड इनकम में 25 से 40% डालते हैं, गोल्ड रीट्स में 5 से 10% डालते हैं, कैश में 5 से 10% होना चाहिए. अल्ट्रा एचएनआई का लगभग इक्विटी पीएमएसएआईएफ 40 से 45%, फिक्स्ड इनकम 25-35%, ऑल्टरनेटिव्स 10 to 20%, गोल्ड एंड ग्लोबल 5 to 10%. And family offices, again, they basically go beyond plain vanilla products, and they invest in public market and private market both. So there, the allocation is completely different, and they go to different kind of, they invest in alternatives, they invest in private markets, they invest in REITs, invest, etc. And definitely these can be jacketed under various buckets. But behavior traits अगर आप देखें इनका और इनके decision lens को देखें, तो जो retail investors जो है, they ask that, and they should ask, they should ask, I'll use the word because most of the investors are not using that lens. Will this help me meet my goal? And the decision lens for the ultra HNI should be, does this improve my portfolio efficiency? And decision lens for family office should be, does this align with our IPS? Because एक बार उन्होंने IPS डिफाइन कर लिया, क्या जो मेरे एसेट एलोकेशन है, क्या जो मेरे इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे IPS के अनुसार हैं या नहीं है, IPS को फॉलो करते या नहीं करते. और अगर इस फ्रेमवर्क को कोई इन्वेस्ट करता है, तो जो पहले मैंने प्रेजेंटेशन में जब मैं बता रहा था कि they will be able to beat the fear and greed cycle. So जो बताने की मैं, I think the point which I want to say, that there is a place of fixed income, because typically अगर आपको 12% से लेके 12 से 13% का अगर कंपाउंडिंग करनी है, तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा. पहला, आपको ड्रॉ डाउन को कम करना है. कितना आप ड्रॉ डाउन को कम से कम कर सकते हैं, कैसे आप एवरी ईयर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करे. और ऐसे सिचुएशन में तकरीबन 30 से 50% एलोकेशन आपका फिक्स्ड इनकम का आता ही आता है. और जो नैरेटिव जो बताया गया, और ये लास्ट 10 साल में अगर आप देखें, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 70% से ज्यादा पैसा इक्विटीज में डाला है. SIP इज ए गुड टूल, बट
I think we need to really ask whether we are doing the SIP in the right asset allocation or bucket or not. If we are not doing it, then probably we should change it. We should ask and create the bucket and create the various the buckets accordingly. So the point जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30 से 50% एलोकेशन फिक्स्ड इनकम का बनता ही बनता है, किसी भी इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी क्लास का हो। और जैसा कि मैंने बताया कि बॉन्ड्स जो है तकरीबन 7 से लेके 11% के एनुअलाइज रिटर्न डिपेंडिंग अपॉन वेरियस बॉन्ड्स आपको मिल सकते हैं। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को उस जैकेट में आप बनाते हैं, then probably that will give you a strong risk adjusted return that will give you roughly lower volatility lower. It can be lower to 40 to 60%. And when market recovers, it will be a faster recovery. So the key insight from the data points and the research and the observation that we have seen is that the sustainable wealth creation comes from consistency. अगर आपने 20 साल की हिस्ट्री को देखा, 30 साल की हिस्ट्री को देखा, तो वी नीड टू एंश्योर दैट year on year basis we are growing our portfolio, and that the consistency matters. It is not the concentration, it is the consistency that matters, and hence fixed income remains a core component of sophisticated portfolio. So the point here is that these are the four things which any investor should look at. The number one is framework, number two is allocation, number three is behavior, and number four is wealth. If you are following the right framework, if you are doing the allocation as per the right framework, you will control the behavior, and if you control the behavior, you'll create wealth. So this is the whole premises of how stability can enable prosperity. सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने पहले शुरू में बताया था कि इन सारे चीज़ों का सार या समरी यही है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे 10 to 12% इफ यू आर मेकिंग, दैट इज basically exceptionally good return. I think our expectations are that we will make 25, 30, 40%, and most of the narrative has been set. And in when market is booming, most of the people, they also do mis-selling, and mis-selling on the basis of return, and because of which typical investors lose money. So what is important for them to understand कि 10 से 12% का कैगर अगर कोई पोर्टफोलियो लेवल पे बना रहा है तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न, इट इज एक्सेप्शनली गुड रिटर्न. Hence bonds are very central, and I clearly told what are the advantage, so that I will not cover. And but I think इस bonds को भी हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए. एक तो हमने, जैसा मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी है, तो अगर आपने कोई लंबे समय के लिए कोई बॉन्ड लिया है, आप उसको यूज कर सकते हैं. आप 5 ऐसे ऐसे अलग तरीके के बॉन्ड्स में, डिफरेंट मैच्योरिटी के बॉन्ड्स में पैसा डाल के आप कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं. आप इंटरेस्ट रेट को देखते हुए कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, उस तरीके से आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो बॉन्ड को में भी इन्वेस्ट करने का नजरिया और तरीका अलग अलग हो सकता है. एंड हेंस बॉन्ड जो है तकरीबन आपको लगभग 2 से 3% रिटर्न जो है वो फिक्स्ड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा देने का, आई थिंक उसमें ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें, इसके पूरे नैरेटिव को समझें, ये कहाँ कहाँ बॉन्ड्स है इसलिए समझें, और इसी पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए हमने BondVue, we have created BondVue. Because BondVue, the platform which we have created this platform to solve the problem, because most of the retail investors, they find the bond as a boring investment. उन्हें पता नहीं है कि बॉन्ड कहाँ पर उनके इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उनको बॉन्ड के बारे में पता नहीं है. और इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने BondVue बनाया, जो एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया, और उसमें हम लोगों ने 4 चीजें किया. पहला तो हम लोगों ने क्या किया कि सारे बॉन्ड्स जो इंडियन मार्केट में हैं उसको हम लोगों ने एग्रीगेट किया. तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप पूरे बॉन्ड, जितने whatever bonds are listed in Indian capital market, you can see it, and you can just you can see as per your need. So हमने उसको फिर क्यूरेट कर दिया.
यू कैन सी एग्रीगेशन में आप देख सकते हैं वेरियस डेटा पॉइंट्स भी है, क्यूरेशन में आप देख सकते हैं कि यू कैन फिल्टर एज पर सेफ्टी, यू कैन फिल्टर एज पर tax incidence, you can filter as per the tenority, you can filter in terms of regular income or cumulative or any kind of. So there are 20-25 filters we have created and accordingly we have curated it. So आप ये देख सकते हैं कि how basically this platform can help you to filter and to see the information in a very कस्टमाइज्ड मैनर. और फिर हमने इसको एनएससी और आरएफके के प्लेटफॉर्म से हमने इसको इंटीग्रेट किया, जिससे कि आप वहीं पर जाकर आप यू कैन बाय एंड यू कैन डू सेलिंग. सो हमने इंटीग्रेशन, हमने एग्रीगेशन किया, हमने क्यूरेशन किया और हमने तीसरा काम किया इंटीग्रेशन किया. और उसके बियॉन्ड जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बॉन्ड के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, सो बिकॉज ऑफ विच वी हैव क्रिएटेड अ लर्निंग हब. Anyone can go and just self-learning course they can attend. बेसिकली तीनों तरीके के कोर्स हम लोगों ने यहाँ पे दिया है. एक 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 इन्वेस्टर है जो जिसे कुछ कुछ नहीं पता है, या कोई एडवाइजर है उसे कुछ नहीं पता है, ही कैन ज्वाइन फाउंडेशनल कोर्स. अगर उसे थोड़ा पता है, ही कैन ज्वाइन इंटरमीडिएट कोर्स. अगर उसे थोड़ा पता है तो एक्सपर्ट कोर्स हम लोगों ने बनाया, सो दैट एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वन कैन गो एंड वन कैन बेसिकली do the self-testing. So I think we are completely 35 minutes we have completed. So the summary of this presentation is, let's move away from the narrative that has been set. So wealth creation is not a wealth creation is a process, it is not a product. So narrative जो कि बनाया गया है कि equity can only create wealth, I think this narrative we need to challenge. The second जो important चीज जो हम लोगों ने बात किया है कि framework is important, because framework gives you right asset allocation. Right asset allocation gives you right instrument, and right instruments give you then right outcome. And it basically completely uh, uh, it will help you basically to beat the fear and greed of the market, which is very important for generating wealth. Third is that bonds are not boring. Ignorance is expensive, because बॉन्ड बोरिंग नहीं है, बिकॉज टिपिकली हमारे दिमाग में, बिकॉज हम नहीं जानते हैं तो हमारे दिमाग में है कि इट्स वेरी बोरिंग. बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, इफ वी रियली अपने आप को हम थोड़ा सा सेल्फ अवेयर करें, then we will be able to understand that there are various kinds of bond, and that bond can generate roughly 2-3% more than fixed deposits, and roughly 1-2% less than 2% less than equities. But even if you are getting 9-10% return, which is very good, and the future of wealth, which is very important to understand, कि ना आप केवल बॉन्ड से पैसा बना सकते हैं, ना केवल आप इक्विटी से पैसा बना सकते हैं, दोनों का अपना स्थान है. But what is more important is the discipline, which basically will help you, to create wealth, and which I am not saying. Even the legendary investors like Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, even the Nikhil Kamath says, and Warren Buffett says that never lose money. That is rule number one. But rule number two is that never forget rule number one. So he is also clearly focusing on the stability of the portfolio. Rakesh Jhunjhunwala, if you see, he says market gives opportunity, but discipline gives return. There will be enormous opportunities in the market, but if you are not disciplined, because of the volatility, you will lose money more often than never. And Nikhil Kamath of late, who is the basically poster boy of Indian equity market, he says, even if you study and if you read and if you see his interview, he is very happy if he is generating 10% return. And he clearly said that asset allocation and risk management matter more than stock picking. It is not the stock picking that helps you to basically create wealth. It is the asset allocation and risk management. Hence, if you are doing the proper asset allocation, there is a place for bonds. So this is, gentlemen, ladies and gentlemen, this is the brief presentation. I thought I should cover it and challenge the normal narratives which has been set in the market, that it is only equity, it is only SIP. That definitely SIP is good, equity is good, but most importantly is
the right framework, because we have seen even SIP for longer period of time, if market is not doing well, आई थिंक लोगों ने पैसे जीरो रिटर्न आते हैं और वो फिर फियर ग्रिड के कारण वो पैसे निकाल लेते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू basically decide the framework, accordingly create the asset allocation, accordingly create the bonds, create the right instruments, and then invest. And if you are doing so, there is a place for bonds. So over to you, Ananya. I think if someone has got any questions, they can ask. Thank you, sir. That was amazing, very informative, very insightful. If anyone has any questions, then we can take up now. There is no question, then probably. So I think, friends, if there is no question, I think request you to go through our website, BondVue, and there is also BondVue India and Learning Hub, the portal, which basically you can go and check and basically polish your knowledge, which will be very, very important for you to create wealth. Great. So I think Sanjeev sir, we can wind up now. Yes. Yeah. Thank you everyone for joining in. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Wish you good luck. Thank you, sir.